Thanks for joining us on the biggest story tonight. Getting in some breaking news on top of the show that the angle of a possible suicide bomber or the suicide bombing being the intention is not being ruled out as of this minute. Amit Chaudhary getting us the details. In fact, we had some details of an intelligence report that was gathered as agencies have been looking into the possible plot to disrupt the elections in Punjab. Now we are hearing that the body that was recovered from this washroom in the Punjab court complex, in the Ludhiana court complex, was beyond identification, and they're not being able to identify the person, and they're not ruling out the fact that it could have been an attempt to assemble the explosive, and that's when the blast may have been triggered. And now that's one of the angles, because even the investigators are not ruling that out. They've gone on record on at least 2 occasions today to say that that's not ruled out. Amit Chaudhary with the details. Amit, what more are you picking up? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआती जो जांच है उसमें सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग का भी कोशिश हो सकती है और बाथरूम के अंदर इस बॉम्ब को असेंबल करने की कोशिश की जा रही थी और असेंबल के दौरान ही ये ब्लास्ट हुआ, ऐसा हमें बताया जा रहा है, ऐसा जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं। यही वजह है कि फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई है, एनआईए जो है वो वहां पर पहुंच रही है और इसके अलावा एनएसजी को भी बुलाया गया है। यानी कि बड़े लेवल पर यह ब्लास्ट करने की कोशिश थी। सुसाइड बॉम्बर हो सकता है वो शख्स जिसकी बॉडी बाथरूम में मिली है, लेकिन उसका जो बॉडी है वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है कि फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पता नहीं लग पा रहा है कि ये कौन है। लेकिन डिप्टी सीएम भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है फिदाइन हमला हो, सुसाइड बॉम्बर हो और एक बड़े हमले की जो आशंका है वो यहाँ पर जताई जा रही है। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल जो एजेंसीज है वो कर रही है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान है, क्या इसके पीछे आईएसआई है, या फिर खालिस्तानी जो गुट है, जो आतंकवादी है, जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है और पिछले कई दिनों से वो चाह रहे हैं कि पंजाब में जो माहौल है वो खराब किया जाए। और इस तरीके के इनपुट्स भी से सरकार को मिले थे, इस तरीके के इनपुट्स भी एजेंसीज ने शेयर किए थे। जी, Yeah, stay with me. I also have Shravan joining us on the biggest story tonight, because even the NSG teams are rushing to Ludhiana. NSG teams and the NIA teams looking into what really happened, examining the site. In fact, the Chief Minister of Punjab, very interesting, because when the blast first happened, the Chief Minister of Punjab did not deny a foreign hand. In fact, they went on record, Channi went on record to say that there has been attempts by Pakistan to sort of try and destabilize Punjab before the elections. And then followed that up with another statement saying that you can't rule out political angle to this. In fact, the Punjab Chief Minister's office issued a statement on record to say that it's surprising that sacrilege, alleged sacrilege, the lynching and now the bomb blast are all around the time when there's an FIR filed against an Akali Dal leader and brother of Harsimrat Kaur Badal, Bikram Singh Majitia. Now that's what the Chief Minister said. Now you have Sidhu, who's saying the angle is completely political, completely ruling out the Pakistan angle altogether. Believe it or not, all of this is happening in Punjab before elections. This could just be the beginning.